Hello everyone, we are back on your favorite learning platform, Learn Forward, and we are going to study from Feathercap. We are on chapter number 3, the Northern Plains. So we have studied about the northern mountains or the Himalayas in the second chapter. Now we will study about the northern plains. Okay, so we will be considering all the northern plains or the states which are covered in the northern plains, that are Uttar Pradesh. So our plains extend from Punjab in the northwest to the Assam in the east. They are so wide. So we are going to study about all the states which are covered in the northern plains. So let's get started. Please be ready with your books. So the northern plains occupy the greater part of the northern India. So जो हमारा north part India का, there are mountains के बाद there are a huge range of plains. The plains extend from Punjab in the northwest to the Assam in the east. So जो हमारे plains हैं northwest में पंजाब से लेकर they are extended up to Assam in the east. So they are so wide. This extensive lowland lies between the high Himalayas in the north and highlands of plateau regions in the south. So जो ये area है basically ये जो हमारे Himalayas है north में वहां से लेकर साउथ में जो पेनिनसुलर एरिया है सारा हमारा प्लेट्यू रीजन बेसिकली वहां तक सारा हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो कवर होते हैं. अ नंबर ऑफ रिवर फ्लोज थ्रू दीज प्लेन्स. सो this area northern plains are very fertile. There is a reason behind that. A lot of rivers flow through these plains. So many of them rise in the Himalayas. बहुत सारी rivers ऐसी हैं जो which originate from the Himalayas. Some rise from the plateau region also. और बहुत सारी ऐसी हैं जो plateau region से भी originate होती हैं. The land of plains is made up of fine soil brought down by the rivers. So this northern plains is made up of a very fine soil. It is alluvial soil. So alluvial soil आता कहाँ से है? जब rivers flow down करती हैं from the Himalayas, तो so they carry lot of silt, sand, clay and soil with it. So ये जब जो आपकी रिवर है यहाँ पे आके सेटल होती है लैंड पे, तो तब ये जो अपने साथ ये सब चीजें लाती है, दैट इज सॉइल, सिल्ट एंड सैंड, तो ये यहाँ पे आके सेटल हो जाता है एंड दिस मेक्स द लैंड वेरी फर्टाइल. So this makes the land fertile and this fine soil is called alluvial soil. ये जो soil है, it is very soft, fertile and light. Therefore, these plains are called the food bowl of India. Why it is called the food bowl of India? Northern plains are food bowl of India. सबसे ज़्यादा cultivation, agriculture practice इस area में क्यों होता है? Because of the rivers. जो rivers अपने साथ soil लाती है, that makes the land very fertile and good for agriculture. The Himalayan rivers always carry a lot of water. जो Himalayan rivers है, as we know, they are originated from the glaciers. So उसके अंदर जो पानी है, you can see the water throughout the year in the Himalayan rivers. They are used for irrigation around the year. So जो irrigation के लिए भी जो Himalayan rivers का water होता है, it is used through around the year. There are 3 important Himalayan rivers, that is Satluj, Ganga and Brahmaputra. So these are the main rivers which are originated from the Himalayas, that is Ganga, Brahmaputra and Satluj. So they divide the northern plains into 3 parts. जो ये rivers हैं ये हमारे northern plains को 3 उसमें divide करती हैं, 3 areas में northern plains को 3 parts, और उन parts को basins बोलते हैं. They are known as basins. Basin क्या होता है? Basin is basically a total एरिया विच इज ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर. मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे सिर्फ एक रिवर का पानी या उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो वहां पे पानी की फैसिलिटीज या पानी की नीड्स वो पूरी कर रही है. सो दैट इज अ बेसिन. अ बेसिन इज अ टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. ओके, सो दिस इज द मैप ऑफ द इंडिया. इसमें आप देख सकते हो कि जो रिवर्स हैं फ्रॉम वेयर दे स्टार्ट फ्लोइंग और कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे फ्लो होती हैं. सो ब्रह्मपुत्र जो है it flows from here till here. ये सारा एरिया ब्रह्मपुत्र कवर करती है. एंड गंगा, these are गंगा, यमुना and its tributaries. जितनी भी यहाँ पे आपको रिवर देखने को मिल रही है, they are all the tributaries of the गंगा. So the Satluj river basin, जो सतलुज river है, which is the important river of the Himalaya, the Satluj flows towards the southwest through the Punjab. So southwest मतलब southern side of the western part of India से जो सतलुज है वो फ्लो करना स्टार्ट करती है. इट जॉइन्स द इंडस
which is in Pakistan, which finally flows into the Arabian Sea. So there is a fact about the rivers that कि ये अपने आप को जो फ्लो करती हैं, या इनका जो लास्ट वो होता है, प्लेस होता है जहाँ पे अपने आप को ड्रेन करती हैं, दैट वो हमेशा कोई ना कोई सी होगा या ओशन होगा. सो हमारे साइड में वेस्टर्न पार्ट में यू विल सी देयर इज अरेबियन सी एंड ईस्टर्न में देयर इज बे ऑफ बंगाल. सो जितनी भी रिवर्स हैं दे आइदर ड्रेन देमसेल्व्स इनटू अरेबियन सी और इन बे ऑफ बंगाल. सो जो सतलुज रिवर है, it flows into the Arabian Sea. The Satluj basin does not receive enough rainfall. So जो सतलुज का बेसन है, बेसिकली जो सतलुज रिवर है, जहाँ पे भी ये अपना रिवर फ्लो करती जाती है, वहां पे रेनफॉल नहीं मिलती है. Why? The monsoon winds coming from the Bay of Bengal break into the heavy rains as they touch the first hills in Assam and West Bengal. So you see, Assam and West Bengal is in the eastern part of India. Okay. जो असम और वेस्ट बंगाल है वो ईस्टर्न पार्ट है, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है. ठीक है. सो जो बे ऑफ बंगाल है दैट इज ऑल्सो इन द ईस्टर्न पार्ट्स. और जब वहां से आपके मॉनसून विंड स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट दे ट्रैवल थ्रू द असम एंड वेस्ट बंगाल, और जैसे ही वहां पे दे टच द फर्स्ट हिल्स, तो वहां पे वो ब्रेक डाउन हो जाती है. और जो पानी की क्वांटिटी है, when they move from east to west, it becomes very less. So this is the reason why the monsoon winds coming from the Bay of Bengal bring heavy rains in Assam and West Bengal, and after reaching, when they reach Punjab, तो वहां पे पानी की जो क्वांटिटी है that becomes very less, जो अमाउंट है रेन का that decreases. Then these winds turn west Punjab through Bihar and Uttar Pradesh. So these winds travel from east to west, and in the middle they travel through Bihar and Uttar Pradesh. The amount of rain decreases as the winds move westward. जो amount होता है winds rain का basically वो decrease होता जाता है जैसे जैसे winds जो हैं travel करती हैं. So the land is irrigated by tubewells and canals from Bhakra Dam made on Satluj. So जो land है basically जहाँ से सतलुज travel करती हुई जाती है, उसके ऊपर एक डैम built किया गया है, उसका नेम है भाखरा डैम, that is भाखरा डैम. सो जितनी भी इरिगेशन का पर्पस पूरा करता है वो भाखरा डैम पूरा करता है. यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द भाखरा डैम जो कि सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है. सो Punjab and Haryana are the two important states of Satluj basin. So these are the main states of the Satluj basin, that is Punjab and Haryana. Amritsar, Ludhiana, Patiala and Jalandhar are the chief cities of this basin. जो अमृतसर, जालंधर, लुधियाना एंड पटियाला ये प्लेसेस ऐसी हैं जहां पे ये रिवर का बेसिन फॉर्म करती है. So this was about Satluj, and now we will study about Ganga river basin. Ganga rises from a huge glacier that is Gangotri, which is in Himalayas. So Ganga का जो origin है that is from the Gangotri glacier which is in Himalayas. It flows southwards through the mountains with great speed. और जो गंगा है, गंगा river है, that flows from the साउथवर्ड्स थ्रू द माउंटेन्स विद द ग्रेट स्पीड. बहुत ग्रेट स्पीड के साथ ये नीचे फ्लो करती हुई आती है. इट इज जॉइंड बाय स्मॉल रिवर्स. जो गंगा है दैट इज जॉइंड बाय अ लॉट ऑफ रिवर्स, नेमली भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी एंड बाय अदर स्ट्रीम्स. सो बहुत सारी रिवर्स ऐसी हैं विच जॉइन गंगा व्हेन इट फ्लोज डाउन. एट हरिद्वार इट कम्स टू द प्लेन्स. जब हरिद्वार पे गंगा रीच करती है, व्हेन गंगा रीचेस हरिद्वार, सो इट इज द फर्स्ट प्लेन लैंड वेयर गंगा रीचेस. Here it becomes slow and fairly wider. So you all have been to Haridwar some time. So आपने देखा होगा कि गंगा का वहाँ पे flow is very slow और but it is very wide. Then it moves eastwards. नीचे flow करने के बाद after coming at Haridwar, then Ganga starts to flow eastwards. Ganga and her tributaries have made the plains very fertile. और जो गंगा और उसकी tributaries है उससे जो land है वो बहुत ज़्यादा fertile हो गया है. Tributaries of Ganga, there are a lot of tributaries of Ganga. First, we are talking about Himalayan rivers. These are all the tributaries of Ganga only. Yamuna, Gomti, Ghagra, Gandak and Kosi. These are the Himalayan rivers which are the tributaries of Ganga. Now we will see the plateau rivers, Chambal, Betwa, Ken and Son. These are the 4 plateau rivers which are the tributaries of Ganga. So among the plateau rivers, इन सब रिवर्स में से द रिवर सन इट जॉइंस द गंगा डायरेक्टली नियर पटना. जब पटना के पास गंगा पहुंचती है, द सन रिवर जॉइंस इट. अदर्स जॉइन यमुना विच जॉइन द गंगा नियर द प्रयागराज. सो जितनी भी बाकी की रिवर्स हैं दैट इज चंबल, बेटवा, कैन, ये जो है ये सब जॉइन करती है यमुना को, एंड यमुना एंड गंगा मीट एट प्रयागराज. सो
Yamuna is the main tributary of the Ganga. Basically, this is Yamuna is the only main tributary of the Ganga. And when Yamuna joins the Ganga near Prayagraj, it is known as the Sangam. जहाँ पे गंगा और यमुना मिलते हैं, where they join each other, उस place को संगम बोला जाता है, which is in Prayagraj. So the Ganga flows through Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. So these are the 4 states जहाँ से गंगा flow करती है. That is Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar and West Bengal. In West Bengal, it branches into 2 streams, Hooghly and Padma. So गंगा जब वेस्ट बंगाल पहुंचती है, वहां पे वो 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, 2 रिवर्स में डिवाइड हो जाती है, नेमली हुगली एंड पद्मा. द हुगली फ्लोज थ्रू वेस्ट बंगाल, और जो हुगली रिवर है दैट फ्लोज थ्रू द वेस्ट बंगाल. कोलकाता इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली ओनली, व्हिच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा. द पद्मा फ्लोज इनटू बांग्लादेश वेयर इट इज जॉइंड बाय द ब्रह्मपुत्र. और फिर उसके बाद जो पद्मा रिवर होती है दैट फ्लोज इनटू द बांग्लादेश, वो बांग्लादेश फ्लो करती है and last में जाके it meets the river Brahmaputra. So after entering West Bengal, the Ganga starts flowing very slowly. जब गंगा वेस्ट बंगाल पहुंचती है तो वहां उसका जो फ्लो होता है that becomes more slower. So the sediment becomes too heavy. Why? This is the reason that the sediments of the Ganga becomes too heavy for the river to carry. इतना फ्लो करने के बाद जब उसके अंदर बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस वजह से जो फ्लो है गंगा का, इट बिकम्स स्लो, इट सेटल्स एंड स्मॉल आइलैंड्स आर फॉर्म्ड. और जब इतना सेडिमेंट इकट्ठा हो जाता है तो वो सेडिमेंट स्टार्ट्स टू सेटल, और इस वजह से स्मॉल आइलैंड्स फॉर्म होने लगते हैं. द एरिया वेयर द रिवर फॉर्म्स सच आइलैंड्स एंड डिवाइड इटसेल्फ इनटू मेनी स्ट्रीम्स इज कॉल्ड डेल्टा. अब जहाँ पे एरिया, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे ऐसे छोटे छोटे आइलैंड्स फॉर्म होते हैं और ये अपने आप को बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देते हैं, तो इस जगह को डेल्टा बोला जाता है. बेसिकली स्ट्रीम्स क्या होता है, जब रिवर एक ट्रिब्यूटरी भी अपने आप को और रिवर्स में छोटी छोटी में डिवाइड करती है तो वो डेल्टा फॉर्म करते हैं फिर. सो जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर मेक द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. सो यू शुड नो दैट गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर द 2 rivers which make the largest delta in the world, and it is known as the Sundarban Delta, which is formed by the 2 main rivers, Ganga and Brahmaputra. Many important and holy cities are located on the banks of Ganga and its tributaries. बहुत सारी cities है ऐसी जो गंगा के बिल्कुल banks पे बनी हुई है. Some of them are, बहुत सारी, will name some, that is Rishikesh, Haridwar, Delhi, Mathura, Agra, Kanpur, Allahabad, which is now known as Prayagraj, Lucknow, Varanasi, Patna and Kolkata. These are the main or important cities which are made on the banks of the Ganga river. So the Ganga basin gets heavier rain than the Satluj basin. जो गंगा का बेसिन है वहां उसके अंदर जो रेन होती है वो that is better than or heavier than the Satluj, but it is not the same everywhere. Because why it is not same everywhere? Because जो climate है हर जगह का it is different, so precipitation or water cycle is also different in every region. So canals and tube wells are used for irrigation. अब जब रिवर नीड्स नहीं पूरी कर पाती पानी की, सो दे हैव टू यूज, पीपल हैव टू यूज ट्यूब वेल्स एंड अदर थिंग्स, कैनल्स फॉर इरिगेशन, राइट. नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र बेसिन. सो द रिवर ब्रह्मपुत्र originates in Tibet. You should know that Brahmaputra comes from Tibet and it is called from a place Sangpo. The river Brahmaputra comes from Tibet and it is called Sangpo. It is called there Sangpo. क्या होता है कि हर जगह उस रिवर को अलग नाम दिया जाता है, तो जहां से वो ओरिजिनेट होती है बेसिकली उसको बोलते हैं वहां पे Sangpo. It enters India through Arunachal Pradesh and flows through Assam before entering Bangladesh. अब इसमें क्या है, you can see जो ब्रह्मपुत्र है that is flowing in north eastern part of India, right? So पहले वो कहाँ जाती है, it flows comes through अरुणाचल प्रदेश, हमारे इंडिया में एंटर करती है थ्रू अरुणाचल प्रदेश and flows through Assam before entering the Bangladesh. और बांग्लादेश में एंटर करने से पहले after reaching Arunachal Pradesh it goes to Assam, then it goes to Bangladesh. So this basin is surrounded on 3 sides by hills and mountains. So जो ये बेसिन बना हुआ है रिवर ब्रह्मपुत्र का, it is surrounded by the hills on the and mountains on the 3 sides. The Brahmaputra flows southwest south towards the sea. So जो ब्रह्मपुत्र है उसका what is the route of this?
पहले वो साउथ फ्लो करती है, देन इट गोज वेस्ट, देन इट्स गो बैक टू द साउथ टू द सी. हंड्रेड ऑफ स्ट्रीम्स फ्रॉम ऑल द साइड्स जॉइन इट. बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं जो रिवर ब्रह्मपुत्र को आके ज्वाइन करती हैं. इट इज अ वेरी वाइड रिवर. सो दिस बेसिन गेट्स हेवी रेनफॉल. और जो ये वाला बेसिन है, इट गेट्स वेरी हेवी रेनफॉल. द ईयरली रेनफॉल इन मौसिनरम, a place, this is basin, is the highest rainfall in the world. So as we have studied in last chapter also, there is a place in a Meghalaya which is known as Mawsynram. So it receives the highest rainfall in the whole world. So this is because of, maybe because of Brahmaputra river. So it is the highest in the world. The Brahmaputra causes very heavy floods during the rains. As you can already see that Brahmaputra receives a lot of rainfall, और जो वो river है that is also very wide, right? So इस वजह से जो floods के chances हैं that increases at the time of rainfall, and Brahmaputra can also cause heavy floods during the rainfall. Now we have studied about the basins, the three important and main basins, that is Satluj, Ganga and Brahmaputra. Now we will move to the life of the people in the northern plains. So we will see that how people live there, what is the lifestyle of the people in the northern plains, what they like to eat, how do they dress, or what are the main occupations of the people. So we are going to learn this in this part. So the vast plains of northern India are entirely flat. जो जितना प्लेन है हमारे इंडिया का, नॉर्दर्न प्लेन है, बेसिकली वो जितना भी ज्यादा आपका जो प्लेन है, दैट इज फर्स्ट थिंग कि वो बहुत ज्यादा वाइड है, एंड सेकंड थिंग कि वो जितना भी प्लेन्स है दैट आर ऑल फ्लैट, वेरी फ्लैट. सो जो दे आर मेड बाय द सॉइल विच इज ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स. अगेन the rivers Ganga, Yamuna, Brahmaputra and their tributaries flow across this region. So there are three rivers which flow across the northern plains: Ganga, Brahmaputra and Yamuna. So these plains extend through the states of, तो ये जो rivers हैं आपकी basically जो plains हैं, ये कहाँ से extend start होते हैं, मतलब these start from Punjab to Assam. I have already told you in the beginning कि पंजाब से लेकर north west से लेकर it goes through east, right? So these plains extend through the Punjab में हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा. So यहाँ से लेकर north west to it covers the east. So the union territories of Delhi and Chandigarh are also in these plains. जो हमारी union territories हैं, तो Delhi and Chandigarh, that also come in the northern plains. Northern plains are one of the largest plains in the world. So northern plains is considered as one of the largest plains in the world. Its soil is very fertile. जो यहाँ की soil है बहुत ज़्यादा fertile है, and there is a sufficient water because of these rivers. Therefore, a large number of people live in northern plains are farmers. So जो mostly लोग यहाँ रहते हैं या फिर लोगों का जो occupation है, जो वो practice करते हैं, they are farmers, right? क्यों? क्योंकि यहाँ पे rainfall अच्छा है, यहाँ पे पानी जो है sufficient है, and another thing is the soil is very fertile, right? So the people here grow wheat, maize, sugarcane, oil seeds, vegetables and fruits. So many things, or you can see a lot of variety of things are grown in the northern plains because of its fertility. There are many cities and many industries. Thus millions of people live in the vast northern plains. So इस जगह पे northern plains में you will see there are a lot of cities and lot of industries. Millions of people live in this area. So the population is here is very dense. यहाँ पे बहुत ज़्यादा population आपको देखने को मिलेगी because of this reason only, that the land is fertile and there is sufficient water for the farmers, right? So this area is populated because of this reason. So another is various parts of the plains differ because of the quantity of rain, level of underground water, ratio of sand and clay in the soil and distance from the rivers and Himalayas. So जो अलग अलग प्लेन्स हैं उनका बेसिकली डिफरेंस क्या है, किस वजह से उनका डिफरेंस आप कर सकते हो, क्या डिफर कर सकते हो उन स्टेट्स उन सिटीज में जो कि आपकी फॉल करती हैं. इसमें आप कैसे कर सकते हो कि वहां पे कितनी रेन है, लेवल ऑफ रेनफॉल, क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल और लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, द रेशियो ऑफ सैंड एंड क्ले की उस जगह पे क्या रेशियो है सैंड और क्ले का, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द रिवर्स एंड द हिमालय. सो दीज ऑन दिस बेसिस यू कैन डिफर ऑल द स्टेट्स. Because of this and traditions way of life changes from place to place. और इसी वजह से
though being though being all the states are all in the same landform or in that is plain northern plains, क्या होता है कि उसके बावजूद भी despite that all the states have different culture, have different food crops grown and different lifestyle. So we are going to study now that what type of culture or what type of lifestyle is enjoyed by the different states of the people, different people of different states, right? So first one is Punjab. We are going to start with Punjab. Men in Punjab wear long kurta and tahamar. You can see here that people are performing Bhangra dance, which is very popular or famous dance in Punjab. They put on a turban on their head. People wear turban on their head in Punjab. Women wear salwar kameez and dupatta. Or the women and they love to wear salwar kameez and dupatta. Wheat chapati, urad dal, milk, curd and lassi are common in Punjab diet. So these are the very common things which you can see in the every household of Punjab. In winters, maize chapatis with sarson ka saag is their favorite. So आपने winters में काफी सुना होगा, that is very famous, सरसों का साग and मक्की की रोटी. So Punjabis in Punjab people love that, that is their favorite meal. The people of Punjab speak Punjabi, their language is Punjabi, and main festivals are Gurpurab, Baisakhi and Holi. So these festivals are celebrated in Punjab. Punjabis are fond of dance and music. So as you all know, Punjabis are very fond of dance and music, and Bhangra is the most popular dance of Punjab, which you can see here. Gidda is the dance performed by the Punjabi girls. So Gidda is the another dance form which is performed by the Punjabi girls. The farmers of Punjab are hardworking. So you can see, as being the very fertile place, the farmers of the Punjab are very hardworking. They produce large quantities of wheat and rice. So you should know that Punjab and Haryana are the lead producers in the cultivation or in the agriculture field. So they produce wheat and rice, which is mainly the staple diet of the northern plains. They use modern farming methods. अब जो उनका farming का तरीका है, they use modern farming methods, tractors, improvised seeds and fertilizers. So you know, improvised seeds are HYV seeds. They are now new technologies, so they use everything to improvise their thing, right? There are many industries in Punjab. It is famous for hosiery goods. Punjab, you will see there are a lot of industries. It is famous for its hosiery goods, woolens, sports goods, पेपर एंड रेलवे कोचेस. सो ये सब चीजें जो है यहाँ पे पंजाब में बहुत ज्यादा फेमस है. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ हियर. सो happy learning, and we will continue the rest part of the chapter in the next video. Thank you.